हाय गाइस, आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे एंड दैट विल बी बिटकॉइन। मैं आपको बिटकॉइन के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में बता के बोर नहीं करूंगा। आई वोंट टॉक अबाउट हाउ इट इज़ अ पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी, हाउ इट वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज माइनिंग, व्हाट इज हैशिंग एंड व्हाट नॉट। हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। बीइंग एन इन्वेस्टर माई सेल्फ एंड दिस बीइंग अ फाइनेंस चैनल, हम इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज the investment thesis behind Bitcoin. What is the investment rationale behind Bitcoin and why is market valuing this thing, this technology at $700 billion and whether or not it is worth even more. इससे related जब हम बात करेंगे, we'll be touching a lot of topics including money, history of money, what constitutes a good and sound money. कुछ macroeconomic concepts के बारे में डिस्कस करेंगे. We'll talk about inflation, we'll talk about currencies. We'll also talk about gold, and then finally, to sum it all up, we'll tell you how Bitcoin comes into the picture and where is Bitcoin currently in this whole monetary system. So if you're interested in knowing all of this, stay tuned because we are starting right now. सबसे पहले हम बात करेंगे what is money. We'll define what money is. Money is any asset in the economy which is used to buy goods or services. Or in other words, it is any asset which is commonly used as a means of payment. ये तो बहुत ही layman language में definition होगी money की. But we'll try going a bit technical. We'll try to understand what do we mean by a means of payment. When we try to go deeper, we'll realize कि means of payment को further हम divide करेंगे 3 different parts में. And that is a store of value, a medium of exchange and a unit of account. अब इन तीनों का अलग अलग मतलब क्या है एंड ये तीनों किस क्रोनोलॉजी में हमें रेफर करने चाहिए, इसके बारे में अब हम समझेंगे. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन एन इकोनॉमी ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज आर डिनोमिनेटेड इन दैट मनी. मतलब कि अभी इन इंडियन इकोनॉमी ईच एंड एवरी गुड एंड सर्विसेज इज डिनोमिनेटेड इन रुपी. एक चिप्स का पैकेट इज वर्थ 10 रुपीज. दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिट ऑफ अकाउंट. लेकिन for a money to be used as a unit of account, there is a prerequisite condition. There is an assumption that we make that both buyer and the seller will be using that very form of money as a medium of exchange. अगर हम इंडियन इकोनॉमी में यूएस डॉलर को as a medium of exchange यूज ही नहीं करते, there is no point in an economy that we start denominating goods and services in US dollar. अब हम समझेंगे medium of exchange का मतलब क्या है. Medium of exchange is what? We in a transaction are exchanging value where I as a buyer am receiving goods or services worth some value in exchange. मैं seller को कुछ money दे रहा हूं and I'm exchanging value through the form of that money. Therefore, for money to be used as a medium of exchange, it should first be a store of value. अगर वो चीज, अगर वो monetary asset is not a good store of value, there is no point me using that money to exchange value because nobody will accept it because that thing is literally worthless. इससे हम ये समझते हैं for anything to be a medium of exchange, it should first be a store of value. and यही chronology है जो हमें पूरे monetary concept के बारे में समझाती है. store of value, medium of exchange and then unit of account. अब हमें समझ आ गया कि money exactly होती क्या है. We'll try to see whether the thing that we today use as money, whether or not it is actually good and sound money. Today we use a rupee ka note as money. So we'll start from third point. Is it a unit of account? Yes, it is a unit of account. आजकल कहीं पे भी चल जाओ, इंडिया में हर एक चीज रुपीज की फॉर्म में डिनोमिनेट की जाएगी. Is it a good medium of exchange? Yes, it is a good medium of exchange. हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, हर एक ट्रांजैक्शन में रुपी विल बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो बोथ ऑफ दीज क्राइटेरियाज आर बीइंग फुलफिल्ड. बट व्हेन वी कम ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, इज इट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, यहां पे चीजें थोड़ी डाइसी हो जाती हैं. यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज वैल्यू. हाउ डू वी नो समथिंग इज वैल्यूएबल और नॉट. करंटली इन सिस्टम में होता क्या है, ऑल दीज नोट्स इन द इकोनॉमी आर सर्कुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक and all these notes are only worth because they are backed by gold. Because all of us in the economy have agreed to the fact कि भाई gold
is valuable, gold is a valuable monetary asset, इसके against कोई notes issue किए जा रहे हैं, hence even those will be valuable. Now all of this is understood. समझ गए कि as of today जो हमारी करेंसी है, जो हमारे नोट्स हैं, it is not intrinsically valuable, but it is only valuable because it is backed by gold. But the problem arises when we realize कि none of these notes are actually backed by gold. Back in 1971 जब Bretton Woods system collapsed, तब this peg between gold to US dollar and US dollar to other currencies broke, जिस वजह से no more are all these currencies which are floating around in the world backed by gold and they are no more redeemable. And इससे हम ये conclusion निकाल सकते हैं कि all of these currencies in the world are no more a good store of value because now since कोई भी gold के साथ peg नहीं है, all of these central banks can print money at their wish whenever they want and how much they want. And this is exactly what has been happening since 1971. I request you to go visit a website called WTF happened in 1971 and वहां जाके आप देख पाओगे कि कितनी ज्यादा चीजें गलत होते जा रही हैं ever since we broke that peg, because now the money that we are using, the money that undergirds our whole economic system does not fulfill any of the criteria of being sound money. It is no more a store of value. It is only valuable because the government says so. And this is very scary because using all of these macroeconomic levers, be it quantitative easing or lowering interest rate, governments around the world have been printing money like crazy. Be it back in 2008 जब global financial crisis आया था और be it 2020 जब pandemic में economies को support करने के लिए काफी ज्यादा money printing हुई है. ये इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. You just have to focus on one thing and realize as in the economy the supply of anything increases exponentially, its value is bound to fall. And this is exactly what we called inflation. Inflation क्या होती है? हम सभी को पता है 20 साल पहले जो चीज इतने की थी अब वो महंगी हो गई है. ऐसा पिछले 20 सालों में हुआ क्या? Rather, it should have gotten cheaper because 20 साल पहले जो ब्रेड मिलती थी आज भी ब्रेड उसी टाइप की मिलती है. इन 20 सालों में इतनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गई है कि कॉस्ट्स वुड हैव बीन रिड्यूस्ड, जिस वजह से प्राइसेस में डिफ्लेशन आना चाहिए था. बट दैट इज बीइंग ऑफसेट बाय ऑल ऑफ दिस मनी प्रिंटिंग गोइंग अराउंड throughout the economic system of all the countries, जिस वजह से inflation is eating away purchasing power of our money, the money that we use day to day. Now we have understood कि जो हमारा total monetary system है, it is being built on a form of money, all these gold-backed currencies और so-called gold-backed currencies, जो हमारे पूरे economic system को build कर रही हैं, that is flawed. इसी को counteract करने के लिए, इसी को somewhat tackle करने के लिए प्रॉब्लम को, we have to understand what is sound money. ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइन करते हैं what is sound money. एंड वही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. इन मॉनेटरी साइंस देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट कि कुछ कहते हैं 15 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छी मनी के, कुछ कहते हैं 5. After studying all of these, I squared in on only these 4 characteristics which I feel are super important and जो सभी पॉइंट्स को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं. These 4 characteristics are money should be durable, portable, divisible and scarce. Now what do I mean by durability? Durability मतलब जो चीज, जो भी एसेट हम मनी की तरह यूज कर रहे हैं, it is durable and it is bound to stay forever. Which is why back in 18th, 19th century, all of the people around the world decided कि हम गोल्ड को अपनी as money यूज करेंगे and then it was established कि gold will be our standard money. This was the reason cattle नहीं यूज होती थी because cattle जो पहले जमाने में यूज हुआ करती थी as a form of money is not durable. उसकी लाइफ है 30-35 साल बाद जब वो मर जाएगी. इट इजंट रियली अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, विच इज व्हाई गोल्ड वाज चूजन. सेकंड पॉइंट वाज पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लीस्ट इनकन्वीनियंस के साथ हम उस मनी को लेके जा सकते हैं एंड उस वैल्यू को अपने साथ लेके जा सकते हैं. दिस वाज द रीजन व्हाई कोरी शेल्स एंड सॉल्ट इज नो मोर यूज्ड एज मनी, बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे आइटम्स हैं एंड अगर हमें कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए हमें किलो के हिसाब से बहुत ढेर सारा सॉल्ट लेके जाना पड़ेगा टू द वेंडर ताकि हम वो ट्रांजैक्शन कर सके. अगेन दिस वाज द रीजन व्हाई गोल्ड वाज यूज्ड, बिकॉज गोल्ड की चाहे एक ब्रिक हो या गोल्ड कॉइन्स हो, हम उसको जेब में ले जाके आसानी से जितनी दूर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं एंड अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं. थर्ड क्राइटेरिया वाज डिविजिबिलिटी. द मनी दैट वी यूज मस्ट बी डिविजिबल अक्रॉस स्केल्स.
इसका मतलब एक मनी को हम जितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकें ताकि हम कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, बी इट एज बिग एज बाइंग रियल एस्टेट टू एज स्मॉल एज बाइंग कॉफी, हम उसको कैरी आउट कर सकें विदाउट एनी इनकन्वीनियंस. दिस वाज अगेन अ रीजन वी डू नॉट यूज लाइव स्टॉक एज अ फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि अगर हमें छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करनी है हम उस गाय की टांग काट के नहीं दे सकते. दिस वॉज द रीजन गोल्ड वॉज बीइंग यूज्ड, बिकॉज गोल्ड में हम उसकी बड़ी बड़ी सिल्लियां यूज कर सकते हैं या हम उसके गोल्ड कॉइन्स यूज कर सकते हैं. जब कोई माइक्रो ट्रांजैक्शन है, इस चीज को टैकल करने के लिए वी इन्वेंटेड गोल्ड बैक्ड करेंसीज, जो इवेंचुअली फेल कर गई हमें जब 1971 में वी ब्रोक दैट पेग. फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वॉज स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मतलब द एसेट दैट वी आर यूजिंग इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू सप्लाई इन्फ्लेशन. इसका मतलब क्या हुआ? सो बेसिकली जो गोल्ड है, गोल्ड का सप्लाई इन्फ्लेशन इज 1.8%. इसका मतलब हर साल पिछले हजारों सालों से टोटल गोल्ड के स्टॉक में 1.8% गोल्ड और ऐड हो जाता है. तो जो हमारा गोल्ड जो हम एज अ मनी यूज करते हैं वो धीरे धीरे उसका सप्लाई बढ़ते जाता है, बट इन अ वेरी कंसिस्टेंट एंड इन अ वेरी प्रिडिक्टेबल मैनर. This is the reason gold is a better form of money than normal fiat currencies, because gold की supply inflation is restricted naturally, whereas fiat currencies में there is no restriction at all. Governments can print money whenever they want and how much they want, which is very scary, because this is the reason एक money की purchasing power in the economy eventually continues to reduce over a period of time. तो हम समझ गए कि as of today कोई भी ऐसी proper money नहीं है जो इन सभी क्राइटेरियाज को अच्छी तरह फुलफिल करे. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर बिटकॉइन कम्स इनटू प्ले. नाउ वील ट्राई टू सी बिटकॉइन इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे खड़ा उतरता है. इज बिटकॉइन ड्यूरेबल? बिटकॉइन इज ड्यूरेबल. बिटकॉइन इज बेसिकली जस्ट एंट्री इन अ लेजर विच एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज. सो इट विल कंटिन्यू टू बी द सेम टिल द एंड ऑफ टाइम. जब तक सभी के सभी कंप्यूटर्स एंड सभी के सभी नेटवर्क्स शट डाउन हो जाते हैं, वो तब तक चलता रहेगा. Hence, it is extremely durable, almost as durable as gold. Second was portability. It is much more portable, much more easily transportable than gold. अगर आपको gold को across nations transfer करना है, you will have to kind of look forward to its shipping costs. Then there's also risk कि अगर ship sink होगी तो gold सारा पानी में चला जाएगा, oceans में रह जाएगा. That is a very huge risk. And also there are huge costs involved. Millions of dollars spend हो जाते हैं अगर आपको एक शिप गोल्ड की अमेरिका से यूरोप लेके जानी है. वहीं अगर हमें एक बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है, इट ओनली टेक 10 minutes and it only costs under $1 for you to travel, for you to exchange billions of dollars worth of value across nations. Hence Bitcoin इस criteria पे is much better than gold. Third point was divisibility. One Bitcoin is divisible into 100 million satoshis. जैसे कि ₹1 is equal to 100 पैसा, $1 is equal to 100 cents. वैसे ही one Bitcoin is divisible into 100 million satoshis. So no matter एक Bitcoin की वैल्यू कितनी भी ऊपर चले जाए, it can still be used because we can carry out all these microeconomic transactions in the economy using satoshis as our medium of exchange or a unit of account. Finally, we'll come to the most important part, scarcity. हम सब जानते हैं gold की supply inflation is 1.8%, right? But Bitcoin is not scarce. Bitcoin is finite. And this is a very thin line of difference जो आपको समझनी पड़ेगी. An asset, any monetary asset, is only scarce to the extent of the amount of resources being expended to mine that asset. मतलब कि हम सब जानते हैं एंड हम सब ने सुना होगा कि अभी एज ऑफ टुडे अर्थ के क्रस्ट में इतना गोल्ड है कि आप पूरे अर्थ को पता नहीं कितनी बार लेयर्स में कवर कर लोगे फिर भी गोल्ड खत्म नहीं होगा. विच बेसिकली मीन्स गोल्ड भर के है, बट इट इज ओनली स्कार्स बिकॉज हम इतनी रिसोर्सेज नहीं एक्सपेंड करते उसको माइन करने के लिए. बट हियर इज द कैच, बिटकॉइन इज नॉट स्कार्स, इट्स फाइनाइट. नो मैटर आप कितनी भी कंप्यूटेशनल पावर लगा लो उसको माइन करने के लिए, there will only be 21 million bitcoins throughout the end of time. Now that we know the total bitcoin in the world will only be 21 million, the fun part is there will come one point in time in future which is 2140 when bitcoin की supply inflation will be zero, while gold की supply inflation फिर भी 1.8 to 2% रहेगी. इसका मतलब जो मनी हम यूज करेंगे अपने इकोनॉमिक सिस्टम में that will not be inflationary, rather it will be deflationary.
if we continue to hold Bitcoin, our purchasing power will eventually increase because there are chances कि people lose their private keys and Bitcoin are forever lost in the economic system. So to sum it up, हमें ये समझ आ गया मनी क्या है, अभी करंट मॉनेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, and how Bitcoin is solving this problem, how it is taking the best of almost every form of monetary asset that we ever knew and it is giving us the best solution possible. Hence is the most soundest, hardest and most perfect form of monetary asset that we have ever seen in the history of mankind. And this is the investment thesis of Bitcoin. Bitcoin is not only gold 2.0 but only better. Now if I was to value Bitcoin, हमें पता है गोल्ड की टोटल मार्केट कैप इज अराउंड 10 ट्रिलियन, जिसमें से 2 ट्रिलियन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल गुड्स, 3 ट्रिलियन इज यूज्ड एज ज्वेलरी, एंड जो 5 ट्रिलियन है दैट इज द मॉनेटरी प्रीमियम दैट गोल्ड कमांड्स बिकॉज इट इज अ मॉनेटरी एसेट. नाउ सिंस वी हैव अ मॉनेटरी एसेट व्हिच इज वे मोर सुपीरियर दैन गोल्ड, जो भी मॉनेटरी प्रीमियम गोल्ड कमांड करता है दैट विल बी स्क्वीज्ड आउट ऑफ गोल्ड एंड इवेंचुअली माइग्रेट टू बिटकॉइन. सो करंटली बिटकॉइन की मार्केट कैप इज अराउंड $700 billion, and if what I say eventually turns out to be true, its market cap will easily reach $5 trillion, which is around about 7x from today's price. And beware, Bitcoin is not just gold, it's much better than gold. इसका total जो TAM है, जिसका total addressable market है, it is trying to challenge other fiat currencies as well, जिसका total TAM is greater than $100 trillion or even more. So इस चीज से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो how huge headway of growth Bitcoin currently has if it turns out to be the exact same thing that I am saying, that what all of us in the Bitcoin community feel it is going to be. Now finally addressing the most important answer, should you buy Bitcoin or not? I won't give you a generic answer saying आपकी risk profile पे depend करता है या फिर आपका portfolio size क्या है, आपकी age क्या है. No. A simple answer to this is no. मत खरीदो. No way. Period. Full stop. The reason I say this is not because I don't believe in what Bitcoin is and what its utility is. The reason I say this is because जो अभी मैंने आपके साथ share किया, it's just 0.001% of total knowledge of what Bitcoin actually is. Through this video, I do not wish to convince you to buy Bitcoin, but I only wish to convince you to realize कि Bitcoin is not a scam, it's a technology. It's an innovative solution to the current monetary problem that we are facing right now and how it hopes to tackle that problem. Therefore, I request you to research more about it and understand whether or not the thing that I said, whether or not the utility that I mentioned is true or not. And if you still feel कि ऐसा हो सकता है, beware. There's a lot of volatility in the crypto markets, especially Bitcoin, and you do not wanna end up taking a bad decision जहां आप गलत टाइम पे exit कर जाओ. Few things before I wrap up this video. I know I've missed out a lot on technical details of how Bitcoin works. So उससे related मैं एक और video जरूर बनाऊंगा. So do not forget to subscribe to the channel and also like this video. If you have any questions, which I'm pretty sure बहुत होंगे, do not forget to just spam them in the comments. I'm more than happy to answer them, and your comments and your appreciations mean a world to me. If you're watching this video till the end, I'm pretty sure आपको ये interesting लगा. अगर ये interesting लगा, आपको ये दो वीडियोस भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे बिकॉज यहाँ मैं और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ एंड आपके साथ वो चीजें शेयर करता हूँ. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग.